Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video, question 5b of Calculus 1998 UPSC CSE Mathematics Optional Paper 1. Show that triple integral dx dy dz upon under root 1 minus x square minus y square minus z square is equal to pi square by 8, where the integral is over all positive values of x, y, z for which the expression is real. सो इसके हम दो तरह के सॉल्यूशन करेंगे, एक गामा फंक्शन एंड लिवोलियस थ्योरम यूज करके, एंड सेकंड इज बाय स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पहले देखते हैं जहां हम गामा फंक्शन यूज करेंगे. इसमें जो फंक्शन दिया गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वो रियल होगा जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन 1. और क्वेश्चन में दिया गया कि ओवर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0. इट मींस रेंज क्या हो जाती है, 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन 1. अब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u1, वाई स्क्वायर इज u2, जेड स्क्वायर इज u3. इसे डिफरेंशिएट किया सो dx इज 1/2 u1 minus half du1, dy is 1/2 u2 minus half du2, dz is this much. ये वैल्यूज इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट किया सो 1/2 तीनों में है, dx dy dz, सो दिस इज q u1 to the power minus half, u2 to the power minus half, u3 to the power minus half, du1 du2 du3 upon 1 minus u1 plus u2 plus u3, or this is 1 minus u1 minus u2 minus u3. So now by Liverlees extension of Dirichlet theorem, ये हम substitute कर सकते हैं कि this is equal to 1/8 gamma 1/2 cube gamma 1/2 plus 1/2 plus 1/2 u to the power 3/2 minus 1 into 1/√1 minus u du. Integral limits are 0 to 1. एक बार लिवोलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं. इफ द वेरिएबल्स x, y, z आर ऑल पॉजिटिव, जो कि इस केस में है, सच दैट h1 is less than equal to x plus y plus z is less than equal to h2. So h1 is 0, h2 is 1, and x, y, z are here, that is under root u1, under root u2, under root u3. Then the triple integral of fx plus y plus z, this is the function, into x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz is equal to gamma l gamma m gamma n upon gamma l plus m plus n, integral h1 to h2. So यहाँ mn l की वैल्यू जो है हाफ है, एंड h1 एज आई सेड 0 है, h2 1 है, u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 du. सो ये पूरा हो गया इक्वल टू, अगेन कहते हैं गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n, इंटीग्रल h1 टू h2 fu u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 du, जहाँ की l m n हाफ हाफ है. सो ये सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यूज आ गई. नाउ वी पुट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, जो दिया गया है du इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा. सो यहाँ पर वैल्यू और लिमिट्स जो है 0 to π/2 हो गया. सो गामा हाफ अंडर रूट पाई होता है, सो दिस इज अंडर रूट पाई क्यूब, ये जो टर्म है, एंड दिस इज 1/8 वाज ऑलरेडी देयर, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दिस गिव्स गामा 3/2 एंड दैट बिकम्स 1/2 अंडर रूट पाई. यहाँ वैल्यूज रख दी u की और du की, and this is 1 minus sin square theta, so this gives pi square by 8. अब सेम क्वेश्चन को हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट से करते हैं.
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम बेसिकली यहाँ निकाल रहे हैं और पॉजिटिव ऑक्टेंट में। सो इसमें अगर हम x इज इक्वल टू 0 एंड 1 से वेरी करेगा, x इज इक्वल टू 0 to 1 x एक्सेस पे, y पे ये हो जाएगा स्फीयर ना होके सर्कल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो y इज इक्वल टू 0 एंड y will be 1 minus x square under root, because x square plus y square is equal to 1, so y is under root 1 minus x square, and in z it will be, that is x square plus y square plus z square, so z is equal to 0 and z will be 1 minus x square minus y square under root. Now we change, because it's a sphere, so we change it into spherical polar coordinates, and these are the standard conversion values, so x, y and z. Now we know dx, dy, dz in spherical polar coordinates will be r square sin theta dr d theta d phi। ये जैकोबियन से आप देख सकते हैं, ये एक दो जगह बताया भी गया है। एंड जो लिमिट है वो r की होंगी 0 to 1, थीटा क्योंकि पॉजिटिव हम ऑक्टेंट में देख रहे हैं, सो 0 to π/2, एंड फाई भी 0 to π/2 वेरी करेगा, because otherwise the values if we see between 0 to 360 20, that is 3 π/2 will be negative, and after 90 cos 180 will be 90, so in one case cos is negative, another sin is negative, so it will be 0 to π/2. Now we put values in this integration. So here integration of d phi, when we do it comes π/2, and when we do sin theta it becomes minus cos theta, and when we put limits on minus cos theta 0 to π/2 it comes 1 minus cos theta, and when we put the limits 0 to π/2 it is 1, because cos π/2 0 minus minus plus cos 0 is 1, so this is, so the whole effect of theta and phi resultant is π/2. Remaining is r 0 to 1 1 minus r square to the power minus half r square dr. We put r square is equal to t, and then we can differentiate it 2r dr is equal to dt, and we can write down r value is t to the power half minus 1, this is लिखा गया t to the power 3/2 minus 1, so this is basically t to the power minus half, and 1 minus t to the power minus half is 1/2 minus 1 is minus half, so this is minus half. So beta mn is 0 to 1 integral x to the power m minus 1, so this is m 3/2 1 minus x to the power n minus 1, n is half, so beta 3/2 1/2, π/4 was there, and beta mn value is beta gamma n upon gamma m plus n, we have written in this form, so this gives π/4, and gamma 3/2 is 1/2 and gamma half, so 1/2 and gamma half, and earlier there was gamma half, so that is gamma half square, and gamma 2 is 1, because n gamma n plus 1 is equal to n gamma n, or we can say that gamma n plus 1 is equal to factorial n. So if we use this becomes 1 plus 1, gamma 2 is 1 plus 1, which is equal to factorial 1, which is 1, and similarly gamma 3/2 is gamma 1/2 plus 1, so this becomes 1/2 gamma 1/2, which we have used in numerator. So I think everything is clear, and gamma
1 by 2 is root pi. Now we got the answer, but I would like to add one more point here. अगर हम r square वाले टर्म को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो एक और तरीका है कि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर लें और 1 सब्ट्रैक्ट कर लें. In that case it becomes 1 minus r square upon under root 1 minus r square. जब इसे हम सेपरेट कर लेते हैं टू टर्म्स में, so that becomes 1 upon under root 1 minus r square minus under root 1 minus r square. इंटीग्रेट करते हैं तो पहले टर्म का इंटीग्रेशन आया साइन इनवर्स r और दूसरे टर्म से आया माइनस r अंडर रूट 1 minus r square by 2 plus 1 by 2 साइन इनवर्स r. लिमिट रखा 0 to 1 and then we will get